Bluetooth connected.
वेलकम उमर। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो? क्या हाल है उमर? वेलकम गाइस। अभी तबीयत नहीं ठीक हुई, ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी रह गई। वेलकम गाइस, वेलकम एवरीवन। क्या हाल है, कैसे हैं सारे? हाउ इज एवरीवन डूइंग गाइस? वेलकम। वेलकम बुलेट। हाउ आर यू बुलेट? Alhamdulillah. Okay, first let's start off with news. We don't have any major news today, so it's gonna be a slow day, but we should get a trade. So what I want right now is on gold. I want this. I'm fine, alhamdulillah, I'm good here. तो जब तक ये नहीं होता मैं कुछ करूँगा नहीं. अगर प्राइस वैसे नीचे निकल गई then it's fine. I'm not trading. I'm only gonna trade if price comes to this zone. तो हम इस जोन का वेट कर रहे हैं. किधर से हो आप बुलेट? Welcome, Chaudhary is live. Welcome, bro. Guys, subscribe कर दें. It's my first time trading live on YouTube. I've traded live on TikTok before, but YouTube पे first time आज trading कर रहे हैं. So just subscribe, guys. Walaikum salam, Mikey World. How are you, bro? From Islamabad. Okay, nice, good, bro. So yeah, guys, this is what I need right now. We sweep here, 5-minute breakout structure like this, and then we'll target this, target this, and we'll target this. Well, in an extreme scenario we do have a TP4 जो कि होगा ये गलत ड्रॉ हो गया, ये इधर होगा, बट हम ये 3 जोन्स टारगेट रखेंगे. ये 1 2 3, बस ये वाला जोन नहीं हम टारगेट करेंगे आज, बिकॉज देयर इज अ नो न्यूज़ मंडे, सो लेट्स नॉट एक्सपेक्ट बिग मूव्स. Session sweep. Yes, I'm waiting for a session sweep before I enter any trades. Walaikum salam, Asim Malik. How are you, bro? Guys, everyone share the live, please. And subscribe. मैं first time YouTube पे live कर रहा हूँ. I've traded live on TikTok before, but YouTube पे first time. लाइव में थोड़ा डिले है, सो आप लोगों को मतलब मेरी बोली हुई चीज़ें लेट आ रही होंगी. थोड़ा सा डिले है लाइव में. वो मैंने खुद नहीं डाला, खुद ही लग गया.
me look at Nasdaq. Welcome Fahad, welcome. Yes, Fahad, I'm waiting for session sweep. No session sweep, no trade. I need the session sweep. Yeah. So War Drago Gaming, welcome bro. Yeah, so if price does end up going down from here, we are not trading, and it can go down from there. It just means that gold had enough liquidity that it just swept lower time frame liquidity and went down, right? But I'm not looking for that. I need a higher time frame sweep. So I need a sweep on the hourly. So if this candle comes till here, we also sweep this high. Yeah, we need to sweep this high, and then after that, if we get a break of structure to the downside, then we'll take the trade. Because if you see here, Asia session swept previous month, was it lows or highs? Yeah, so Asia session swept previous month lows, previous day highs, and it gave a strong reversal from there. So there is a chance that gold could reverse today. But according to my strategy, what I see here is that gold will stay bearish for London session, and it will change direction in New York or tomorrow. So I do see gold going back to bullish soon, but I see this session as staying bearish. So I just need a session sweep for confirmation. Until then, we don't really do anything. Guys, if you have any questions, ask me. Until then, अब हम क्या करें? जब तक ट्रेड नहीं बनती, we will just wait. I'm not looking at NAS, bro. We can look at NAS. I just want to trade gold this week. You know the reason already. But let's just look at NAS quickly. Okay, so in the 4 hour we are bearish. There was a small fair value gap we tapped into with an order block. Price went down after that. Let's see if there's any SMTs. Okay, there's no any visible SMTs. Okay, 1 hour, let's look at this.
Same thing for Nasdaq. Nasdaq and gold are actually pretty much moving similarly today. I do see this as accumulation, manipulation, and then we're gonna distribute down. But to short Nasdaq, we need a 5-minute break of structure. So Nasdaq makes a high and then breaks a low, and then you can enter the trade. Stop loss here, and you can target here actually if you wanna have bigger target. Then ये इधर ये हमारा next target है, इधर जाएगी market Nasdaq पे, but we are focusing on gold. See guys, this is accumulation, manipulation, distribution playing out. Nasdaq and gold are pretty much moving the same these days, so gold should also be bearish for this session. So guys, we need gold to come here. Here. And once we get there, we are going there right now. Which prop firm is best in Pakistan? Bro, FTMO for all around the world. And I don't know. I heard about funding pips. Never tried them. Funding pips bhi achhi hai. But FTMO globally, they're well known. Abhi, right now we're just consolidating, man. We need a sweep, and if it does sweep, then same thing for gold. We do have an accumulation, manipulation, and distribution possibly playing out. And same thing is happening on Nasdaq. But it's not confirmed until we get a breakout structure. We didn't get a breakout structure as yet on Nasdaq, so maybe it's still manipulating. We only get confirmation that market is done manipulating once we shift structure. Right now we're still in an uptrend here, so we don't know how long it wants to manipulate, or even if this even is a manipulation. But I think it will just manipulate and then drop. जब तक मार्केट ऐसे चल रही है हम कुछ भी नहीं कर रहे. खैर है गाइस, नहीं करेंगे ट्रेड, कोई बात नहीं. जिधर आप जल्दी करके ना उधर आपने लॉस कर जाना है. मैं जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ ना, मेरे माइंड में यही होता है कि यार आज ट्रेड नहीं लेनी मैंने. मैं कंप्यूटर पे बैठा होता हूँ और मेरे माइंड में ये होता है कि आज मैंने ट्रेड नहीं लेनी, मैं चार्ट्स को सिर्फ देखने जा रहा हूँ. फिर जब आपका सेटअप बनता है तो फिर आपको पता होता है कि इधर मेरा ट्रेड लेना बनता है. एवरी डे आई गो इन टू द मार्केट्स विद दिस माइंडसेट कि मैं ट्रेड नहीं ले रहा. उससे आपको इन ऐसी सिचुएशंस में आप फोमो से बच जाते हो. एंटरिंग टू अर्ली, यू नो,
यहाँ एंटरिंग ऑफ नथिंग कि कोई सेटअप नहीं बना हुआ, आप बस तुक्के लगा के आप एंटर कर रहे हो। तो सेटअप बनेगा हम ट्रेड लेंगे, नहीं बना कोई बात नहीं, नो वरीज गाइस। AI वेंट डाउन 1%, ओह नो। अभी आज आज इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। कैसे कैसे हुआ आपका लॉस? There we go guys, it's going to manipulate like I said. So guys, there is also an auto block here. Yeah, this. वो अलर्ट बच गया हमारा स्वीप हो गया है। वी हैव जस्ट स्वेप्ट एशिया हाइज। या हमने ये ऑटो ब्लॉक इनवैलिडेट कर दिया, सो आई एम रिमूविंग इट नाउ। Okay, let's see how far high it wants to go up, because let's look at Nasdaq. So Nasdaq still wants to manipulate. हम DXY क्विकली चेक कर लेते हैं। सो हमारा बायस है बेरिश, राइट, बट DXY डाउन ट्रेंड में आ गया हुआ है। 1 आवर हम देखते हैं, 1 आवर इज ऑल्सो इन अ डाउन ट्रेंड, बट वी आर ऑल्सो बेरिश ऑन गोल्ड, सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर। ये इतना हमें नहीं चाहिए बैंड बाजा। ये ज़्यादा इजी हो गया। ओके गाइज, अभी हम ना ये ट्रेड फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं। we're gonna wait because you see these two markets, they move inversely. DXY and gold, they move inversely, and they are both bearish right now. So either gold wants to change trends right now, or we need to have DXY switch trends also. We're gonna wait. If DXY was in an okay bro, okay joker, अगर DXY अभी अप ट्रेंड में होता we would have entered somewhere. अभी हम इधर एंट्री ले लेते, 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता, हम इधर कहीं एंट्री ले लेते, बट वी हैव टू बी मोर कॉशियस। सो लेट्स वेट, 5 मिनट डाउन ट्रेंड में आता है एंड देन वी विल टेक आउट ट्रेड। Guys, past 12 or 13 days, I think we haven't lost a single trade. We are on a good win streak. I hope we can protect it. The highest win streak I have ever had was 22 days, and we are already halfway through that.
ज़्यादा ही काम हो गया, नींद आ रही है अब। When a sore throat just won't stop, get Xauusd with Vicks vapor lozenges. I'm Sean, and I'm Elliot. Damn, it looks so juicy to enter here, but we're not gonna enter right now. There is a slight chance that gold can just keep going down here, and we only gotta get our trade somewhere here. That happened to us last Friday. We were actually supposed to enter on top, but we got our trade somewhere here. But we still hit TP. We targeted these next zones. You know what? I'm gonna let it go because I wanna enter this trade here, but it's risky, and I'm just not feeling confident about it. I'm gonna let it go. Let's wait for a 5 minute break of structure. I don't feel confident about this trade. So now I need, I need a 5 minute break of structure. वन मिनट को देख ही नहीं रहे हम. लेट्स स्विच टू द 5 minute. सो अ गुड ट्रेड हियर वुड बी, अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसे ये लो बनाए, देन हाई बनाए, इस ऑर्डर ब्लॉक को फिर से टेस्ट करें, स्ट्रक्चर शिफ्ट करें, एंड देन कम बैक अप हियर, एंड देन हियर डेफिनेटली देन इट्स गोना हिट. दैट्स गोना बी सच अ नाइस ट्रेड. आंखें बंद करके ले लेंगे अगर ऐसा हुआ. Until then, we're not doing anything. Trade looks really juicy to enter right now as well because, like I said, there is a slight chance that gold can just keep going down and only give us a trade here. That happened to us last week, Friday.
फ्राइडे को मैंने एक ट्रेड दी थी, दिस वाज द एग्जैक्ट सेम थिंग एंड दिस इज व्हाट हैपेंड ऑन फ्राइडे, बट आई फील लाइक टुडे इट्स अ फेक आउट. यार गाइज से समथिंग इन द चैट, व्हाई इज एवरीवन क्वाइट? बात करो. मैं जा रहा हूँ ऑफलाइन, फिर वैसे ट्रेड कर लेते हैं अगर बैठ के शक्लें देखनी हमने एक दूसरे की. Alright, okay, bro. यार ये कॉपीराइट फ्री म्यूजिक कितने बेकार होते हैं. Introducing ClickUp Super Agents, the world's first AI. Sideways also tell us about your strategies entry so we can learn too. So just to give you guys an overview without going too much in detail, वो हम mentorship में करेंगे. I basically wait for an external sweep on the higher time frames and a major draw of liquidity to be swept. Once that is swept, I wait for a change in direction in the decided bias, right? So bias mein kaise decide, how I decide my bias, that's a whole different topic. So once I've decided my bias, I wait for a sweep. Once that is done, I wait for a change of trends on the lower time frames, and then I target the next draws of liquidity on the lower time frames and the higher time frames to take my profits. उमर तुम्हारे सिग्नल्स परफेक्ट होते हैं माशाल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह. Like for example, right now, see this was a zone I marked, this blue line. You guys can see what happened. Price went up here, it swept, it came down. So what does this mean? This means that there was quite a bit of stop losses here. Like jitne bhi support resistance traders and all these support resistance traders, they had their stop losses here, right? Whoever was trading support and resistance, and there's probably also a lot of sell orders here because of this order block that I marked. So price came there, took out stop losses, took orders, and then it fell. But now how are we going to get confirmation that it's going to continue falling? We need a change of trend. So right now 5 minutes is still in an uptrend. We need a change of trend. Once the trend shifts, then we're going to target the next draws of liquidity, which will be on the lower time frames and the higher time frames. So lower time frames here, higher time frame will be here. But for today, because there's no news Monday, that means
that there is no good volume driving the price, so we are not going to target the zone. You guys can try it. If you guys want to leave a small runner, take profits at TP1, TP2, leave a small runner here, but I personally wouldn't hold anything to TP3 today. So TP3 is always the higher time frame draw of liquidity, and the other two TPs are the lower time frame draws of liquidity. TP1 is the smallest draw of liquidity, TP2 is mid-range, and TP3 would be the highest. Okay, if that makes sense. Mine stop loss was also there. Damn, bro. Market likes to do that. They like to stop hunts, bro, because a lot of people trade support resistance also, right? A lot of people that are in trading and kind of a bit new, they like to trade support resistance because it's easy to understand, but market likes to hunt them down. Market likes to hunt smart money concept down as well. Like us traders, the market likes to hunt us down too, so no one is really safe. They want everyone to lose and they try their best, and that's why so many people fail. See guys, this is the trade I was telling you that I wanted to take here. We are up just 400 pips, but it's fine. I'll let the trade go, even though I knew that gold was gonna go down from here. This is where gold was when I told you guys that there is a slight chance gold can just keep going down, but I let the trade go because I wasn't feeling confident about it. So if you're not psychologically okay with something, don't do it. It's fine, more trades will come. You have to make sure that if you're taking a trade, are you psychologically okay with that? Like, is it going to make you nervous? Is it going to make you feel confident? If you think it's going to make you feel nervous, I think let it go. Feel now. I just need an up candle. Probably the next candle is going to be a green candle. I think if gold doesn't have a lot of sell pressure, we're going to get something like this now. So an up candle, then probably maybe it will fall till here. I'm not sure. I'm not a magician. And then this, and then this. I agree, better to be safe than sorry, 100%. There were many times where I knew what the market was going to do. I predicted the market correctly, but I didn't enter, and it happens to everyone. Or shuru mein it does hurt you because you're like, damn, I knew I could have made money here. I knew what the market was going to do. Why didn't I enter? Why didn't I do this? Why didn't I do that? But then that messes up with your mind, because jo hona tha wo ho gaya, the trade is already gone, but now you're just messing your mind up, and then you're going to enter stupid trades. Is there any hierarchy of watching your free course on YouTube, like any specific playlist? No, there isn't as yet, but I'm planning on making one. I'm planning on making a proper playlist for everyone so they can learn. This is the second time it has happened. Even on Friday, gold did the exact same thing. Consolidation, we came here, and then it broke structure here. I wanted gold to break structure here, so we could have gotten a better trade. But it's fine. We can still get a good trade. Now I just need gold to close below here, or make an higher, a lower high, and then change structures.
Let me tell you something about Phonia. Yes, it's the rent new smartphone Phonia. But for me, Phonia is where I get to save Imania, aka cashier. Why? Because for a smaller price per month, I get a smartphone insurance and connection To think all it takes is visiting Acumen's, Pep, or phonia.co.za. T's and C's apply. You should also apply. Now we're gonna follow the same strategy we did on Friday, because that's the same trade we're forming right now. Exactly the same. Everything is exactly the same. So I need a break of structure, and then I need gold to retrace up till here, and from here we'll enter stop loss somewhere here and target these zones. This is still going the way I predicted to go. Yep. No entry, no Umar, ये ऊपर थी entry 1 minute की. I did mention it on live. Let's take this, but then I wasn't quite confident in this trade because I was expecting gold was gonna, make a green candle and then a red candle, and then we can enter. But it didn't. They just kept going straight down. Mashallah, you are really good at trading. Thank you, bro. Okay, now you see the thing is DXY also that time it was in a deep downtrend. What that means is that these two markets, they move inversely. So I needed this to be at least be in an uptrend. अगर ये uptrend में होता तो हम शायद ले लेते. ये दोनों markets ना opposite चलती हैं. So now we are changing trends here and we're changing trends there. Guys, this gold is literally doing the same thing as last week Friday. Same thing. We just at different price zones. It's the exact same candles, exact same thing that is happening right now. So we will enter the exact same way we did last Friday, and we'll see what happens. Okay guys, we can get our entry soon if we close here below this candle, right? Small retracement up, and we'll target if we enter somewhere around 5443. Yeah, we'll target here
5443 and 5553, these two zones. इतना टारगेट रखेंगे बस. स्टॉप लॉस हमारा इधर इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर हम लगा देंगे. So our trade is gonna look something like this. Okay, never mind, अभी वो ऊपर जा रहा है. But if we do get a closure here, our entry is gonna be somewhere around here. Stop loss somewhere around here, and this will be TP2 like this. 1:1.8 RR, something like that, quite decent. If it does come up till Asia highs again, then that's perfect. That's exactly what I needed. अगर ये इधर आके स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, then that's exactly what I needed. So there's different scenarios, guys. It's not like सिर्फ एक ही चीज़ होनी है, यही होना है. I give you guys a few scenarios. The one scenario is we shift structure right now. It retraces up, we trade here. Second scenario would be gold comes up till here, we shift structure from here, then we get even a better trade. So it depends what gold wants to give us. Until then, guys, let's just chill. Let's just wait. बट इक्विलिब्रियम फाहद अगर बेरिश साइड का आप देख रहे हो ना, तो यू शुड वेट फॉर दिस फेयर वैल्यू गैप टू बी इनवैलिडेटेड. ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है. आपका यू नीड अ कैंडल क्लोजर बिलो दिस कैंडल, ठीक है. ये विक छोड़ के ऊपर चली गई है. सो इधर अगर आप बना रहे हो तो इधर आप बुलिश इक्विलिब्रियम बनाओगे, बेरिश नहीं. ये भी फ़िलहाल मैं बेरिश बना रहा हूँ, ये बेरिश इक्विलिब्रियम है, ठीक है. तो इधर अगर आप बनाते हो ना, ये इक्विलिब्रियम अभी फ़िलहाल इसलिए वैलिड नहीं है बिकॉज फेयर वैल्यू गैप कोई इन्वर्स नहीं हुआ. ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स होने के बाद अगर इक्विलिब्रियम में आती ना, देन दैट्स ऑल्सो अ सेटअप. ओके, DXY से थोड़ी कंफर्मेशन लेते हैं इधर. मुझे तो बहुत फेक आउट्स दिख रहे हैं. गोल्ड इज लाइक प्लेइंग विथ माई माइंड राइट नाउ. यहाँ पे अभी कितने ज़्यादा ट्रेडर्स ट्रैप हो रहे होंगे गाइस. शायद क्या पता हम भी हो जाए, अल्लाह ना करे. It happens, guys. We're still waiting for our entry though.
गाइज मैं 1 सेकंड के लिए ना कैमरा कवर कर रहा हूँ. ऐसे नहीं होगा कवर. Ali, you still here, bro? I'm just quickly gonna take a smoke. यार गाइज हमारी ट्रेड सून बनने वाली है. अगेन इट्स ऑफरिंग एज सेल सेटअप राइट नाउ, बट मुझे ना अपना बेस्ट सेटअप चाहिए आज एंटर करने के लिए, बिकॉज मार्केट जो है ना इट्स गिविंग अ लॉट ऑफ फेक आउट्स. सो अंटिल वी गेट दैट वी नॉट डूइंग एनीथिंग. 5 मिनट का ट्रेंड चेंज हुआ तो हम फिर ना वी विल लुक एट अ ट्रेड. Today is also the first day in VIP, guys, so there's a lot of new people trading with new capital. So I'm being careful with all your guys' money, so no one takes a loss today. That's why I'm being extra careful. If we were sitting in profits in the VIP, I would have taken some trades here today already. But since we're starting first day, I want my best setup to form today before we enter any trades. Guys, can you see the chart clearly? इसको मैं ऐसे करूं और पीछे कि ठीक है, दिख रहा है.
Guys, this is perfect. What is happening right now? This is perfect. This is exactly what I need. Either one structure shift, retrace up here, and then this is what we're gonna trade. RR भी अच्छा मिलेगा, risk to reward. Yo, Mohsin, welcome, bro. I'm just quickly posting on Instagram that I'm live. गाइस अच्छी ट्रेड मिलेगी बस लेट्स बी पेशेंट गाइस. ट्रेड अच्छी मिलेगी. If things go as expected, we roughly have about 10 to 15 minutes before we enter a trade.
I just want to see what Nasdaq is doing. Looks like Nasdaq still wants to manipulate more. Look guys, once we enter this trade, if we do hit stop loss, just in case, just to tell you guys, that means gold wants to change trends. So that means our bias would be wrong. We are bearish on gold. I'm basically expecting gold to come touch here before New York opens and then reverse. But if we do just change trends here, then that means gold is just switching trends in London. Guys, अब हमारी trade soon बन सकती है. We will get a trade soon. We get a break of structure here, retracement. We'll enter somewhere around here. Stop loss here. ठीक है. TP1 हमारा इधर होगा, TP2 हमारा सेम चीज़ें हैं सारी. So if things go as predicted, then we're roughly 10 minutes away from entering a trade. ये कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है. नाइस, आई लाइक दिस. इसके अच्छे हैं. गाइस हमें अब अच्छी ट्रेड मिल सकती है.
They'll be calling me royalty. See, guys, even if we enter here, do you really want to sit through this consolidation? Or do you just rather sit without risking your money and watch this consolidation? Because it's irritating. So you want to get out of this. Because on the 1 minute, this is consolidation. Price is not really moving. Guys, tab tak everyone that's watching, please subscribe my YouTube channel because it's my first time live on YouTube. I usually do live streams on TikTok. So I know a lot of you guys haven't subscribed to my channel. I think buy is open 44450.
किधर कह रही हो आप? यू कैन, थोड़ी देर के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग. अगर आप करना चाहते हो रिस्की ट्रेड, वेरी रिस्की ट्रेड, बट योर TP will just be here and here max. I'm bearish, तो मैं सेल्स ढूंढ रहा हूँ. अगर सेल ट्रेड बनी we will enter cells, otherwise I'm not entering. Yeah, I know what you're talking about. You're probably looking at the trend change, right? And maybe this order block and fair value gap. अगर आप बाइज की बात कर रही हो, for cells I just need a structure shift to confirm that this was actually manipulation. You see, abhi tak we haven't shifted structure, so we don't know yet if this was manipulation or if gold wants to keep going up and this was just a trend pause. Once we get a change of trends on the 5 minute, then that means that ये एक accumulation, manipulation and distribution phase चल रहा है. Guys, it's hard being patient, I know. It's really hard. गलत बना रहा हूँ मैं, एक सेकंड. ऐसे No, don't enter yet. Don't enter yet. We're still waiting. It's a Monday, that's why it's so slow. Otherwise, market usually moves faster than this.
Monday है and there's no big news moving the market. So that's why it's not choppy, and that's why we have to wait so long for a trade. Otherwise, we usually get trades within the first 1.5 hour, which is done now. We will wait another 1.5 hour for a trade. Otherwise, I'm not gonna trade. But now usually हमेशा first hour में you do get a trade. I always get a trade with my strategy in the first hour of market open. Yeah, you're right, Bullet Heel. दो कैंडल्स में ज़्यादा इंसाइट मिलेगी. अगर ऊपर जाता रहा देन हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ट्रेड आज इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली है. बट इफ़ वी डू कम डाउन, आई जस्ट नीड अ स्ट्रक्चर शिफ्ट फॉर कंफर्मेशन. I'm happy to see there's other people that are patient with me, and no one's just blindly entering trades. So where are you from? So I stay in South Africa, Johannesburg. And you? Where are you from?
Where is everyone from, guys, in the chat? I'm from Pakistan, Islamabad. Oh, okay, that's good. And since when are you trading? यहाँ वाली पाकिस्तान. ओके आसिम भाई, आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हो? अराउंड 2 years. ओके माशाल्लाह, इट्स गुड. और ग्रुप को आप कब से फॉलो कर रहे हैं आप सब? एरम में कब से हो आप सब? Oh, from day one. Nice. Around a month observe किया and थोड़ा सा loss भी किया, but finally found someone who really is a trader. Thank you so much, Mr. Ultimate. Love you, bro. जिससे सीख भी सकें एंड साथ ट्रेड भी कर सकें. थैंक यू ब्रो. आई थिंक दिस इज गोइंग टू 4555 नाउ. देखें ये ना, दिस व्हाट आई मार्क्ड इज एशिया. So this is a zone that can constantly push price down. 455 is possible अगर if it wants to sweep liquidity again. मुझे सिर्फ एक स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए कंफर्मेशन के लिए. And guys, even though past 3 months we have had 87% win rate, फिर भी किसी भी ट्रेड में don't over risk. मेरे किसी भी सेटअप में दिए हुए ओवर रिस्क मत करना कोई कि यार इसकी ट्रेड्स हमेशा अच्छी जाती हैं. मैंने कभी नहीं रिस्क बढ़ाया ये सोच के कि यार मेरा तो विन स्ट्रीक चल रहा है, मैं नेक्स्ट में बढ़ा लेता हूँ. रिस्क अपना कंट्रोल्ड और सेम रखें ताकि अगर बीच में कोई रफ पैच हिट हो जाए तो आप लोग एक ही ट्रेड में ख़त्म ना हो जाओ. लीव रूम कि अगर कोई इशू हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, ट्रेड्स जाती हैं बुरी, तो लीव रूम फॉर लॉसेस. अब मेरा पिछले लास्ट 12-13 days we didn't lose a single trade, but not even one trade I increased my lot size. मेरी lot size उतनी थी. I am new. I'm the one जो WhatsApp में आपसे पूछता रहता है कुछ हर वक्त. ओके आसिम मलिक, समझ गया. I'm not in a hurry, just waiting. I'm glad कि मेरे साथ यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो जल्दी नहीं कर रहे और पेशेंट हैं. आप लोग गाइज मेरे VIP में हो, join my VIP guys. It's completely free to join. All you have to do is sign up with the broker that I'm using and send my admin a screenshot कि आप लोग हमारे लिंक के अंडर साइंड अप हो. देखें इसके पीछे कोई इतना कोई ख़ास मोटिव नहीं था क्योंकि पास्ट 3 months आई हैव बीन सेंडिंग सेटअप्स विदाउट इवन आस्किंग यू गाइज टू साइन अप अंडर माई लिंक. बट अभी ना कुछ ऐसे लोग आ गए हुए हैं ग्रुप में हु आर जस्ट देयर टू वॉच
and they're not even trading. And then there's some serious traders who have real capital in the markets and who wait for the setups. So that's why it's important कि उन लोगों को priority दी जाए, and those people are prioritized. So that's why I decided that sign up under my link so I know that you are trading, and come the site, join VIP. It's still free. मैं कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा आप लोगों से. I'm not telling you guys pay me this, pay me that. It's free. Just sign up under my link, deposit whatever you want to trade with, and आप लोग स्क्रीनशॉट भेजो, and आप लोगों को VIP में भी एंट्री मिल जाएगी. क्योंकि अगर मुझे सेटअप्स गेट कीप करने होते तो फिर मैं लाइव बैठ के ट्रेडिंग क्यों करता. मुझे उसमें कोई इशू नहीं है. So guys, gold के साथ you guys must also use these two markets, silver and DXY. DXY ये वाली market, make sure this market is always moving inversely, ठीक है. ये वाली market should always move opposite of gold. Silver यार इसका ना पूरा टॉपिक है, SMT divergence जिसको बोलते हैं. But these two markets they move similarly, and कभी कभी silver आपको gold की movement के बारे में कुछ बता सकता है. Not always, but at times silver can give you a hint of what gold is about to do. But ये DXY तो ये just make sure this is always going in the opposite direction, because DXY represents the strength of the dollar. तो जाहिर सी बात है when dollar strength drops gold की price ऊपर जाती है, and when dollar strength rises gold की price नीचे जाती है. Easy stuff. My setup didn't form yet. Still waiting, bro. Bayans 1352. This is, I think, Ninja, if I'm not wrong. यार यहाँ पे ठंड बहुत है यार. It's cold. Good info, bro. Love it. Thanks, bro. And easy stuff. किसी को भी समझ आ जाए जो अभी बताया. Really easy stuff. And it helps a lot in taking trades. इधर हम थोड़ी DXY से इंफॉर्मेशन लेते हैं.
सी इधर भी हमें ना सिल्वर और गोल्ड ना हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट. दिस वाज अ हाई, ठीक है, मतलब मार्केट यूजुअली प्रीवियस हाइज को स्वीप करती है, राइट. सो दिस वाज अ हाई दैट सिल्वर डिडंट स्वीप, बट इफ यू लुक एट गोल्ड, देन गोल्ड स्वेप्ट दिस हाई. सो वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमारे फेवर में कंफर्मेशन चली जाती है दैट मार्केट वांट्स टू सेल. बट डोंट ओनली रिलाई ऑन दीज थिंग्स. वी कांट जस्ट से कि ओ उधर ऐसे हुआ इधर ऐसे हुआ तो हम सेल खोल देते हैं. वी हैव टू कंबाइन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. मेरी ट्रेड ऑलरेडी रिटर्न डाउन है, जो सेटअप है ना वो मैंने लिख के रखा हुआ है, बिकॉज मुझे पता है मेरी ट्रेड किधर बननी है. इट्स ऑलरेडी रिटर्न डाउन एंड आई हैव कॉपीड इट ऑलरेडी. आई एम जस्ट गोना सेंड इट वंस इट फॉर्म्स. I already know where my entry is gonna be. I already know where my stop loss is gonna be. I already know where my take profits is gonna be. I'm just waiting for the setup to form. हाँ जी सर. हाँ जी सेल सेल सेल. मैं ज़रा ग्रुप में मैसेज कर दूँ यार. Sir, uploading. Yeah, man, it's so choppy.
नो न्यूज़ मंडे है ना, दिस नो गुड न्यूज़ ड्राइविंग द मार्केट. एक ये ट्रेड थी सुबह के टाइम, बट इट वाज अ बी ट्रेड, यू नो, it wasn't one of the best setups. ये वाली ट्रेड थी, I did mention it on live that gold's gonna fall from here to here, but it wasn't like, you know, we didn't have enough confirmations. हमारे पास enough confirmations नहीं थी, and a lot of people are starting trading today with their funded accounts in the VIP. So I want to make sure everyone starts off with a win, inshallah. So I'm going to try my best, and I'm waiting for a cleaner setup. Because this, I would classify this as a B trade. It wasn't an A plus, but it played out. B trade doesn't mean it's a loss. It just means there's lower chances of it playing out, but it did. Give me a structure shift, gold. Give me a structure shift. Guys, आप लोग इधर जो हैं, what brokers are you guys trading with? Are you guys using Xauusd, or are you guys trading prop firm accounts? Are you guys trading different brokers? आप लोग खुद किधर ट्रेडिंग कर रहे हो फिलहाल, सारे जो लाइव पे बैठे हैं फिलहाल? Xauusd, nice Anan, yes I remember you bro, I added you in VIP myself, आपको मैंने खुद ऐड किया था. QT funded, yes उमर, आपका भी पता है. Xauusd, okay, nice guys. Funding pips MT5, okay. कौन सा वाला अकाउंट है बुलेट? Which one is it? Like वो जो $6,000 वाला है, or is it a bigger account? What are the possible TPs? So guys, you see what I'm seeing this, right? Let me explain nicely again. I'm seeing this as accumulation. This is manipulation. We are manipulating. Once we get a break of structure to the downside, then that's my confirmation to enter. I'll just need a small retracement in an order block or something, and then हम ऐसे targets रखेंगे. अगर for example इधर trade बनती है, ठीक है, ये जिधर अभी मेरा ये dotted line है, ठीक है, let's say हमारी trade इधर बनती है, for example अभी फ़िलहाल, तो that's 4550, right? ठीक है, this will be our TP1 because this is a fair value gap which pushed price up before, so हम इसको TP1 रखेंगे. ये इधर हमारा TP1 होगा, TP2 हमारा इधर होगा, और TP3 हम अगर रखना हुआ then इधर होगा. But all these things don't matter until we get a breakout structure. No breakout structure, no trade. I'm bearish for the day. Gold could be bullish because Asia session में we swept monthly lows and dailies कौन से थे? Daily lows भी थे, ठीक है. देखो वहाँ से मार्केट ने कितना कैसे रिवर्सल दिया. सो एक ये चीज़ भी हो सकती है that this could just be a trend pause before market wants to continue higher to the zone.
तो जब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती किसी चीज़ की, हम अभी बैठे हुए हैं। देख लो आप लोगों के आगे मार्केट इज़ कंसोलिडेटिंग, मार्केट को भी खुद नहीं पता उसने क्या करना है, तो आप लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट ने क्या करना है। हाँ, हमने पॉसिबल सिनारियोज बनाए हुए हैं दैट अगर ये हुआ तो बुलिश है, ये हुआ तो बेरिश है। अगर बुलिश हुई तो मैं ट्रेड नहीं ले रहा, अगर बेरिश हुई तो मैं ट्रेड लूँगा। मैं रिवर्सल्स 4 आवर के रिवर्सल्स में ट्रेड नहीं करता गोल्ड पे। द ट्रेंड इज माई फ्रेंड गाइज। 100K, ओके, नाइस नाइस, माशाल्लाह। कहाँ तक पहुँचे हो आप? Let's see what happens. It's day 1, बैड स्टार्ट कर लिया, बैड डे स्टार्ट कर लिया। अच्छा, अब फंडेड अकाउंट्स के लिए आई हैव अ गुड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू पास देम। आई हैव पास्ड मैनी एज वेल बिफोर। उसकी स्ट्रेटजी मतलब थोड़ी मेरी डिफरेंट है, थोड़ा अग्रेसिव लेके चलता हूँ बट कंट्रोल्ड अग्रेसिवनेस होती है वो। तो मैंने उस स्ट्रेटजी के साथ, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के साथ ही अपने अकाउंट्स क्लियर किए हैं। एंड आई फील you guys can too if you follow the same risk management strategy. Can you tell me? Yeah, sure. So basically for funded accounts, especially for 100K, ठीक है, 100K के लिए आसान है. This is how you're gonna trade. It's aggressive, but I'm gonna tell you 2 options, right? So your first option is that start with $500 risk, ठीक है. अगर 100K US डॉलर का आपने अकाउंट लिया हुआ है, start with $500 risk, आप उसको लेकर जाओ 1000 पे. Once you take it to 1000 plus, right? Take it, next trade आपने risk करना है $2000. $2000, if you lose that trade, you go back to 99K, right? And then you just drop your risk again to $500. If you win it, you need to win it with a small risk to reward, not a big risk to reward. Don't aim for big risk to rewards, aim for small risk to rewards. So add 2K there, ठीक है. Let's say आपने 1:2 का टारगेट रखना है, ठीक है, 1:2 का टारगेट रखना है. सो दैट्स 5000. 1000 से 2000 के ऊपर आप 1:2 का टारगेट रखोगे, दैट्स 4000 प्लस द 1000 यू हैव टेक्स यू टू 5000. एंड देन लास्ट ट्रेड अगेन सेम रिस्क $2000 एंड सेम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 इस बार आपको चाहिए होगा. सो देन दैट टेक्स यू टू 8000, जिसमें आपका फेज़ 1 क्लियर हो जाता है. ये पहला ऑप्शन है, इसमें थोड़ा हम प्रॉफिट बफर बनाते हैं. जो सेकंड है और जो सिंपल टू अंडरस्टैंड है, लेट मी टेल यू दिस. रिस्क 2% ऑन योर फर्स्ट ट्रेड, यू नीड टू एम फॉर 1:2, ठीक है. 1:2 का आपने एम रखा, गेट टू 4000, एंड देन द नेक्स्ट ट्रेड रिस्क योर एंटायर 4000 प्रॉफिट्स टू पास द अकाउंट इन 2 ट्रेड्स. ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ यू लूज़ योर सेकंड ट्रेड, यू जस्ट गो बैक टू ब्रेक इवन. आप लॉस में तो नहीं हो ना, यू स्टिल इन प्रॉफिट्स. एंड अगर आपका लॉस हो जाता है स्टार्ट में ही, देन जस्ट स्टिक टू द 2% रूल. 1% रिस्क नहीं करना, 2% रिस्क करना है. आई डोंट नो इफ़ आई मेड सेंस टू यू. मैंने अपनी तरफ से सही कोशिश की कि मैं सही से समझाऊँ. यू गॉट इट? ओके, परफेक्ट.
ट्रस्ट मी इट वर्क्स. थोड़ा सा आपको शायद थोड़ा सा आपको डर लगे, यू माइट गेट स्केयर अ बिट कि you're risking 2%. सो साइकोलॉजिकली आपको थोड़ा होता है, बट इट वर्क्स. अपने आप को उधर काम रखो एंड डू इट. इट वर्क्स, प्रॉमिस यू. मैंने अपने सारे फंडेड अकाउंट्स ऐसे ही पास किए हैं. whenever I tried to change my risk management strategy, it took me so long to pass it. मेरा पासिंग टाइम बहुत बढ़ जाता था, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मसले होते थे. जब मैंने इस सेम रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉलो किया है, तब मेरा अकाउंट पास हुआ है. Could you please repeat in English? So for a 100K account, the risk management strategy that I have is that you need to start up with a 2% risk. Okay, start with a 2% risk. Your aim is to get to 1:2 target, right? So you're gonna risk $2,000 to make $4,000, right? Let's say you won the trade. If you won the trade, second trade, you risk the entire $4,000 and aim for 1:1. You pass the account in 2 trades. Let's say you lost your second trade after getting to 4,000. It's fine. You're back to break even. Repeat the same steps. Let's say you lost your first trade. Stick to the 2% rule, and your aim should be to bring the account back to break even before aiming for profits. So if your account is in drawdown, if you're in loss in your 100K account, don't focus on profits. Only focus on bringing the account back to break even, because trading a break even account gives you much more confidence than trading an account that's in drawdown. So if you're in drawdown, risk big enough. Don't de-risk. Risk the same size, but your aim should be to bring the account back to break even before taking any further steps. Right, so possible scenario, guys. Now this is what we want. This is a trend line liquidity. It would be great if we can shift structure and then enter here. It's controlled. Yeah, it's controlled aggressive. हम like careless aggressive नहीं हो रहे, because once if your account is in drawdown, your priority should be break even first. It could be the best trade in the world, but focus on getting your account back to break even in that trade. मतलब जो आपने टीपी लगाना है ना, वो उधर होना चाहिए जिधर आपका break even account वापस आ रहा है. Once you back to break even, follow these steps. You need 2 wins in a row to pass the account. 2 wins in a row. And if you have a low risk to reward, then 2 wins in a row is not something big. बहुत easy है. और हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड भी इसलिए हम छोटा रख रहे हैं. हम रिस्क प्रॉपर कर रहे हैं और कंट्रोल्ड अग्रेशन है. गाइज अभी भी हमें वी विल गेट अ नाइस ट्रेड इफ वी डू ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, कम अप, order block, drop down. Market is slow. I can't do anything. Looks like we're getting that break of structure. अभी फिलहाल इस सेशन के लिए अहमद वी आर बेरिश. I do see gold turning into bullish structure this week, but फिलहाल के लिए इस सेशन के लिए बेरिश. ओके गाइज, ये यहाँ पे ना हमें कहीं एंट्री मिल सकती है. थोड़ा सा ऊपर आ जाए, थोड़ा सा ऊपर आ जाए.
यार नीचे निकल गई है बगैरत मार्केट। खैर ऊपर आएगी तो हम ट्रेड लेंगे वरना नहीं लेंगे। Okay, I need next candle to come up. Next candle should retrace. ये हमारी एंट्री ना इधर कहीं बनती है, बट मैं बताऊंगा इधर आते ही डोंट जस्ट एंटर। मैं बताता हूँ अगर यहाँ पे कैंडल आई देन वी गोना एंटर। ये हमारा ओडो ब्लॉक है गाइस, जिधर मैं चाह रहा हूँ मार्केट है। ये ओडो ब्लॉक है। इधर आ जा गोल्ड, इधर आ जा आजा। गाइस एसएल वगैरह मैंने लगा के रखा हुआ है इधर, तो आप लोग अपनी लॉट साइज अगर कैलकुलेट करनी है तो कर लो।
We might just enter this trade now. आएगी 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 आएगी। एक फे वैल्यू गैप भी हमारे पास, फे वैल्यू गैप भी इसको बैलेंस करना है एंड वो भी है। ओके हम फे वैल्यू गैप में आ गए हम। गाइस वी गोना एंटर दिस नाउ। हमारी एंट्री बन गई है। अब हमें बस चाहिए 1 मिनट की 1 मिनट की क्या कहते हैं वो चाहिए, ब्रेकअप स्ट्रक्चर चाहिए अपने डायरेक्शन में। एंटर करेंगे, ट्रेड हमारी बन गई है। I'll tell you guys when to enter, don't enter yet. ये मार्केट बहुत स्लो है।
Okay, guys, I'm entering here. यार पिला पिया दोनों बाहर चली गई हैं। I went to the street, guys.
ये एक एंट्री इधर भी बनती है. गाइज यू कैन स्टिल एंटर द ट्रेड जब तक ये 4550 तक नहीं है आप लोगों की एंट्रीज वैलिड हैं. ठीक है, यू गाइज एंट्रीज आर वैलिड. मैं ज़रा कैमरा कवर कर रहा हूँ फिर से थोड़ी देर के लिए. Guys, TP one hit.
We're about to hit TP2, guys. TP2 hit, guys. TP2 hit, TP2 hit, TP2 hit, TP2 hit. Guys, everyone close your trades, TP2 hit. Guys, close all trades. Close all, close all, close all.
Guys, this trade was taken on live. Both TPs have been hit. Why do I have this one? I hope you guys do like and subscribe. Guys, yeah, do like and subscribe, please. My YouTube channel, please. Everyone, like and subscribe. Guys, just get out of all trades. Choppy as hell. TP2 was hit. My traders in VIP secured TP2. Guys, how much did everyone make? How much did everyone make? It was a slow trade, guys, but a win is a win. Win is a win. Okay, guys, that's it. I'm done for the day. I secured profits. I myself made some good money on this trade, and I'm done now. And I'm done for the day. And I'll see you guys tomorrow, guys. Thank you for joining, everyone. I'll see you guys tomorrow. Bye bye.